हेलो पिला माने आज तुम देख क्लास 10 रो द सॉल्यूटरी रिपर रो पार्ट 2 टा पढ़िबा आ पार्ट 2 रे स्टैंडर्ड 3 और स्टैंडर्ड 4 टा हमें पढ़िबा। प्रथमे वर्ड मीनिंग डाकी देबी लिखि नब खाता रे तापर होची बुझेई देबी तापर तार प्रश्न उत्तर गुडाक करबा। प्रश्न उत्तर माने सही पोएट्री भितर जो गुडाक किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि आलोचना करबा। किंतु पिला माने प्रथम कही दो जो मैंने आम चैनल को वर्तमान पर्यटन सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर जब वीडियो भल लगे देखि सारा वीडियो को निश्चित लाइक कर तुम सांगसाथी मानक जब पठेगा चाहूँ तुम्हें पठे पार। या पूर्वर तुमको पार्ट 1 ले आम स्टैंडर्ड 1 आउ 2 टा तुमको बुझा जाइए। नेक्स्ट आज स्टैंडर्ड 2 टा पढ़ा। वर्तमान ये देख सब वर्ड मीनिंग रहा अब ये वर्ड मीनिंग गुड़ाक सब खाता को सब वीडियो पोस्ट कर सब लिखि नियो। वर्ड मीनिंग गुड़ा सब खाता को पोस्ट कर लिखि तापर एटा होची स्टैंडर्ड 3 टा तुमको बुझेइबा। नेक्स्ट आस स्टैंडर्ड 3 को आस। देखो स्टैंडर्ड 3 टा मु पढ़ाई दउची ना विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द पेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बेटेल लॉन्ग एगो और इज इट सम मोर हम्बुल्ले फैमिलरी मैटर of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। बस यार बर्तमान वर्ड मीनिंग गुड़ाक कौन कौन वर्ड अच्छी से गुड़ाक मुझे कहीदे देख। बर्तमान देख परहैप्स जान जदि तापर देख पेंटी पेंटी मान हूँ दुखपूर्ण है। तापर देख ये नंबर्स नंबर्स गीत अर्थ जीव है। पेंटिव नंबर सब नंबर माने से दुखपूर्ण गीत। तापर फ्लो माने बही जा जानिछ फॉर ओल्ड माने किछि पुराना कथा गुड़ाक। अनहैप्पी माने दुख प्रकाश करवा दुखित जरा। फॉर ऑफ थिंग्स माने कौन कहल ना कौन सी दूर अतीतर घटनावली। बैटल माने युद्ध क्षेत्र जानिछ। तापर होछि देख हम्बल अर्थ है साधारण कॉमन नॉर्मली जेटा साधारण। तार ले अर्थ है गीत रे जीव। तार फैमिली माने हूँ फैमिली घटना किसी जनाशुना फैमिली मैटर माने कौन कहला किसी जनाशुना घटना फैमिली। तार नेचुरल माने प्राकृतिक स्वरूप माने दुखित सब जानिछ। नेक्स्ट आस बुझी नबा ना। बर्तमान कवि कहते विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स कहीं मत कही पार कि सी कौनटा गाउला कौन गाउला सी परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो जदिव से दुखपूर्ण गीतटे गाउला फॉर ओल्ड माने किसी गोटे हूँ पुराना कथा को भाविकी गाउला ना अनहैप्पी ना से दुखित थिला बोली सेमिति गीत गाउला ना फॉर ऑफ थिंग्स माने कौन सी दूर अतीतर घटना गुड़ाक भाविकी से गुड़ा गाउला किसी घटी जाइथिया घटना को ना एंड बेटेल लॉन्ग एगो ना किसी पुराना लड़ाई बा युद्ध किसी घटना घटी से हूँ से गीतटा गाउला। बुझीपार। नेक्स्ट आस और इज इट सम मोर हम्बुल्ले ना किसी हूँ साधारण गीतटा से दुखपूर्ण गीतटा से गाउला ना फैमिली मैटर ऑफ टुडे ना से दिन किसी फैमिली रे किसी घटना घटी से गीतटा गाउला ना सम नेचुरल सरो लॉस और पेन ना किसी प्राकृतिक दुख तार रही जाइए ना क्षति हो जाइए तार कौन ना किसी जंत्रणा से गीतटा गाउला और दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन ना जहाँ होइछि आगक भी हुई पारे एमिति भाविकी से घटना से गीतटा गाउला। तेणु स्टैंडर्ड 3 टा यही प्रकार मीनिंग थिला। नेक्स्ट आस पढ़िबा स्टैंडर्ड 4 टा। देख स्टैंडर्ड 4 टा मु पढ़ुची ना व्हाट एवर द थीम द मेडन sang as if her song could have no ending I saw her singing at her work and over the sickle bending I listened motionless and still and I mounted up the hill the music in my heart I bore long after it was heard no more। देखो यार वार मीनिंग गुड़ा कही दउची। देखो व्हाट एवर द थीम्स एठी माने कोन ना जेउ घटना हेउना काहेकि एथर आसीबो मेडनटा आज किए गला से झियोटा बालिका बा युवती आ सैंग माने एठी गाउची जानिथिबो। तापर आजिप रो अर्थ होची सत्य जेमिति। तापर देखो एंडिंग माने शेष जानिथिबो। तापर सिंगिंग वर्क सिकल माने कौन कहला एटा दा है। तापर रहा हूँ मोशनलेस माने जानिछ मोशनलेस माने हूँ मोशन माने गति करवा गति मोशनलेस माने गतिहीन बा निश्चल।
तापर देख स्टिल माने स्थिर, माउंटेड माने पर्वत चढ़ा जेटा कह जाए। बस सरला बुझीदबा। देख ह्वाट एवर द थीम्स द मेडन सेंग माने जो घटना होना कहीं युवती गीत गाउला से जेकोसी घटना घटना कहीं निजर दुख ही था कि कौन दुख कथा भाविकी था कि आगो किसी दुख आसुथार भाविकी से गाऊ था। ह्वाट एवर द थीम्स द मेडन सेंग जेकोसी घटना होना कहीं युवतीटा गीत गाउछि आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग सत्य जेमिति एमिति गाउछि सत्य जेमिति लागुछि ता गाइबार जेमिति किछि शेष नाही। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क मु देखि पारुछि गीत गाउछि से निज काम करबा सहित से गीत मध्य गाउछि एंड ओवर द सिकल बेंडिंग एवं से दाटा को धरिकी सी होची कौन करुछि ना होची फसल काटिबा सहित होची गाउछि से गीत गाइबार चलीछि। आई लिसेन्ड माने मु ताको शुणुली मोशनलेस एंड स्टिल माने होची निश्चल निश्चल होइकी एवं स्थिर होइकी शुणुली एंड आई माउंटेन ऑफ द हिल एवं मु पहाड़ को मध्य आस्ते आस्ते चढ़ीकी पर्वत को चढ़ीकी मध्य जाउथली कारण मोर जीवार आगु थिला। तेणु तापर देख द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर से म्यूजिक तार से गीतटी मो हृदय को छुई जाइतिला हृदय जेमिति घुरी बुलुतला हृदय चारिआडे खेली जाइतिला लॉन्ग आफ्टर इट वाज हियर नो मोर किंतु बेसी समय पई होची मु सुनी पारली नाही काहे कि मु आगो आगो चली गली। बुझी पारिलो विषयटा को भला विषय गीतटा को भला पद्यटा को बुझी पारलो। एबे यार क्वेश्चन आंसर को वर्तमान जीवा क्वेश्चन आंसरटा या भितर स्टांजा 3 स्टांजा 4 रे जो जो भितर क्वेश्चन अच्छी से गुड़िक वर्तमान आम चेष्टा करवा आंसर देवाई। आस क्वेश्चन आंसर को जीवा नेक्स्ट देख एक नंबर देती आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 or 2 सेंटेंस इच। आई देती व्हाट माइट द गर्ल सॉन्ग बी डिस्क्राइब एज अकॉर्डिंग टू द पोएट माने कौन डिस्क्राइब केमिति करछंती ना केमिति गीत थिला ना वेरी सैड ना अकॉर्डिंग टू द पोएट द गर्ल सॉन्ग माइट बी डिस्क्राइब्ड एज वेरी सैड। डबल आई व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग फ्लो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ केमिति का ना दुखपूर्ण थिला तनो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ सैड सॉन्ग फ्लो। 3 आई व्हाट माइट द प्लेंटिव नंबर बी फॉर now the plaintive number might be for old unhappy for of things and very long ago हैला for old कमा नहीं गोटे कमा दब unhappy तापर far of things and very long ago। IV नंबर को आस what are the song described as more now the song are described more as humble and familiar matter today they are also described as some natural sorrow loss or pain। V नंबर को आस what did the song seem to have to the poet केमे जना पड़ुची ना the song seemed to have no ending to the poet ना केबे शेष होबो ना जेमे जना पड़ुची ना। नेक्स्ट V आई what was the girl at गर्ल्सटा कोठी ना गर्ल was at her work से काम थिला। what did the poet see the girl doing at her work now the poet saw the girl singing at her work। next IX number what was the girl's sickle described to be sickle टा कौन करथला bending करथला ना girl's sickle was described to be bending। X number what did Wordsworth listen to the music ना केमिति से सुनुथले म्यूजिक टाकू से कहूची कवि ना स्टैंडिंग स्टिल एंड मोशनलेस ना Wordsworth लिसन टू द म्यूजिक स्टैंडिंग स्टिल एंड मोशनलेस। XI हाउ वाज द पोएट described while listening to the song now the poet was described to be still and motionless while listening to the song। XI sorry now where did the poet mount up poet कोउटी के माउंट अप करथले ना the poet mount up the hill पहाड़ ना। what did the poet bear in his heart X3I now the poet bore the girl's music in his heart। XIV when was the music heard no more now the music was heard no more long after। बुझीला
नेक्स्ट आस 2 नंबर पढ़ा 2 नंबर देखिए फिल इन द फॉलोइंग विथ द राइट वर्ड्स आई नंबर द पोएट वार्सट वांट टू नो व्हाट द गर्ल्स डैश ना सिंग्स से देख अकॉर्डिंग टू द पोएट हिज डैश नंबर फ्लो ना हूँ कौन प्लेंटिव तब देख दुखपूर्ण ना अकॉर्डिंग टू द पोएट 3 आई नंबर द प्लेंटिव डैश फ्लो द प्लेंटिंग नंबर से 2 थर लिखाई अकॉर्डिंग टू द पोएट द सॉन्ग माइट बी फॉर ओल्ड अनहैप्पी फ्रॉम थिंग्स एंड डैश लॉन्ग एगो ना बेटल द पोएट वंडर्स वेदर इट इज ए familiar dash of today familiar matter the maiden sang seems to have no dash no ending the girl was found dash at her work na singing now the solitary reaper was found singing at her dash na work the solitary reaper had the dash bending na sickle bending the poet Wordsworth listened to the song dash and still motionless and still the William Wordsworth mount of the dash hill the poet bore the dash in his heart music the poet bore the music in his dash heart the poet dash bore the music in his heart Wordsworth poet ना लिखा poet कौच poetry the poet Wordsworth dash the music in his heart bore long after the dash was heard no more नाम the music तार long after the music was not dash anymore ना not heard सुनी पारिबे नाही आउ तार पिला माने बुझी पारला 2 नंबर हम सरीला हमर देखो पार्ट 2 वीडियो टी हमर सरीला नेक्स्ट पिला माने देखो पिला माने तुमको जदि वीडियो टी भल लागि छ बुझी पारिछ तुम माने ताले वीडियो को लाइक करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं संग साथी माध्यम को मध्ये शेयर करि परिवो या पर देखो या परवर्ती चैप्टर को हम जिबा तेनो आज पई एतिक बाय बाय।